Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Madad. So we were talking about Chandraat and Chanta in our previous class. If you don't have any question from those two subjects or any subject regarding Jamaatkhana or the rites and ritual, we can go ahead and continue. So after the Jamaatkhana, we will talk about the beach. जो हम नॉर्मली उस चांद को ऑब्जर्व करते हैं कि जब चांद रात और फ्राइडे एक साथ आ जाए, यानी कि तकरीबन 4 महीने के अंदर या 3 times a year we observe beach. I think ये बहुत अच्छा सवाल होना चाहिए within the Jamaat, what is so important about a Chandraat which falls on Friday? Because we have a Chandraat every month and we have a Friday every week. But there is something about these 2 days coming together. And Imam had put so much emphasis on the beach and the roza on the beach. Even though Imam had not put any emphasis on Ramzan roza. But this one day, he has put so much emphasis on it. If you remember all our previous lectures on Jamaatkhana or even in the Ilm Shanasi, the one thing that we have been talking about is there is no hocus pocus. We don't do anything in our tariqah without having a logic, a hikmat, some sort of wisdom behind it. But sometimes, because of our so much love and the faith on our tariqah, we don't ask question. Remember, asking question is not a sign of beimani or not having a faith, but curiosity to understand our tariqah better. So what do? We ask question. So question today is, what is so important about this day and why do we have to keep roza? To understand this, first we need to understand roza itself. Roza itself. So what is a roza? If we look at the Shariat or at the level of the Shariat, in the month of Ramadan, we observe roza by starting early morning at sunrise and until the sunset, we don't take any physical food. If there is a roza, but not eating the food for those 12, 14 hours, depending on the sun, but then if we eat so much food after the sunset and before the next sunrise, then it defeats the purpose. The purpose was to restrain oneself from overeating or taking in something unnecessary or in a large quantity. So if you look at the history and go back 1400 years, and if we again learn from the history, we will see how people would have eaten all the time, eat in large portion, or not only continuously eating, but eating
But if you look at the Quran, there was a street. Now we look at the Quran, especially in Surah Baqarah, it says that Rosa is the reason, or the reason we have Rosa, so we may purify ourselves. रोज़ा का मतलब जो था वो प्योरिफिकेशन था, ना कि भूखा रहना था. रोज़े का मतलब अपने आप को पाक करना था. लेकिन यही बात अगर हम कुरान के अंदर देखें तो फिर लिखा होगा ज़कात इसलिए है ताकि तुमको पाक किया जाए, फिर जिक्र इसलिए है ताकि तुमको पाक किया जाए, नमाज इसलिए है ताकि तुमको पाक किया जाए. पता चला कि same way what we talk about our tariqah today, so we don't do anything without a reason. Just like that, at the time of Prophet Muhammad, when the living guidance was there for the Muslim, he was giving them guidance so they would be purified, ताकि उनकी तरक्की हो, so they can elevate themselves, so they can understand Islam and they can move forward. So what was one single purpose of Islam and what is the one single purpose of Ismaili Tariqah today? So we can say easily to become one with the Imam. और उस ज़माने के अंदर दौर शरीफ में फनाफी अल्लाह. And how do you become fanafi Allah? By purifying yourself. क्योंकि अगर कोई पाक चीज़ है उसके साथ अगर आपको एक होना है, so you need to become like that person or become like that nur or become purified, so you may become one with the pure. If you become light, then you can become one with the light. So what does Imam do and what did Prophet Muhammad did in Dawr Sharia? He gave the followers the tools so they can use those tools to purify themselves, so they may come closer and closer to the nur of Imam today, because in our tariqah we believe nur of Imam is the nur of Allah, and at that time they could say, so they may become closer and closer to the nur of Allah. That was the purpose. Of course, that purpose has been lost and been forgotten. But in our tariqah, we still pray multiple times a day by saying, Ya Mullah, give us the Nurani Didar, or keep us close to your Nur, or have that thought that we need to become one with the Nur of the Imam. So that thought is there. Come back to Roza again. So in Surah Baqarah in 183, it will talk about that Roza and the purification through Roza. So go ahead, and if you have it in English, go and pull that too. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Baqarah, chapter 2, verse 183. चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं. अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले. और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हों तो वो फिदिया दें. एक रोज़े का फिदिया एक मस्कीन को खाना खिलाना है. और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है. लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोज़ा रखो. यहाँ पर इंग्लिश. Yes, please. Okay, 2:183. परवेज.
2:183. O ye who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may self-restrain. जी, यहाँ पर जो एक आपने नोट किया कि if you cannot, for some reason, you can have same purification by giving food or helping the miskin. अगर ये भूखे रहने की बात थी, if you just take that as physical, in a physical sense, और यहाँ पर सिर्फ ये था कि रोज़ा meaning don't eat. If that was it, then how would it work if you are eating and giving some money or helping some miskin or somebody who's in need? How would that work? That would not purify you. Meaning it was an act of good deeds that would have made them purified. So now we have another understanding of Roza. Roza is the act of a good deed, or restraining yourself from something. किसी चीज से आपको रोका जा रहा है. अब what is this? किसी चीज से what is this? कि जिससे आपको रोकने के लिए कहा जा रहा है. Meaning the physical roza was a symbol, a way of teaching that look, you can restrain yourself from something that you are doing unnecessarily. Alright? So let's just take one example. कि खाना कम, बोलना कम, सोना कम. And those are the three conditions of क्या ज़्यादा करना है अभी? खुदा को ज़्यादा याद करना है, right? अपने आप को ज़्यादा प्योरीफाई करना है और अपने आप को ज़्यादा करीब करना है to the नूर of इमाम. तो ये जो चीज़ें थी जो रोज़े के उन्वान से, the things that were given to us or things that was taught to us in the word of Roza, restrain yourself. So it was not only for the food, but to restrain yourself from the things which you do unnecessarily. यहाँ किसी चीज से के अंदर कमी लाने के लिए कहा जा रहा था कि अगर आप इतना खा रहे हैं तो थोड़ा कम खाएं. अननेसेसरी बातें नहीं करनी है, यानी कि बोलना नहीं, अननेसेसरी. और ज़्यादा ओवर स्लीप नहीं करना है. और अगर आप पीर पिंदात जवाब मर्दी की किताब में देखें, the attributions of the Momineen, out of I don't know how many attributions are listed in Pir Pindat Jawab Mardi, you will find these three things. Attribution of Momin is the Momin eat less, sleeps less, and talk less. और जब वो कम खाता है, by default, automatically, उसकी नींद थोड़ी कम हो जाएगी. अगर नींद कम हो गई, of course उसको कोई मसला नहीं होगा इबादत के लिए उठने में. वो बोलेगा कम, of course उसका ध्यान ज़्यादा लगेगा इबादत में. You can see कि किस तरह से ये टीचिंग जो थी, जो रोज़े के उन्वान से थी, by using the word roza, the teaching behind it or the wisdom in the back of it was different. Lekin when we forgot and we only hang on to the physical or the shariat, then we forgot कि इसके पीछे इसका मकसद क्या था. So we took the examples and we forgot the mamsul, the essence of the roza. ठीक है, आ जाए वापस. अगर हम if we understand roza now, let's come to beach again. So on a beach,
we are encouraged to keep the roza for the one day. So what is so important about Chandraat, which falls on Friday, or about those 2 days coming together? So what is the day of Friday stand for us as a Muslim? Prophet Muhammad. जिस तरह से हमको याद है संडे का दिन आदम का था, मंडे का दिन नोह का था, ट्यूसडे का दिन इब्राहिम का था, वेडनेसडे का दिन मूसा का था, थर्सडे का दिन ईसा का था, एंड फ्राइडे का दिन मोहम्मद का है. So this is the Mubarak day, जिसको हम जुम्मतुल मुबारक कहते हैं. And throughout the Muslim world, including Ismaili Tariqa, we observe this day as a special day. हम थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, थोड़ा सेलिब्रेटिव वे में हम जमात रह जाते हैं, न्याज होता है. The environment changes a little bit from the daily routine जो हम जमात रह जाते हैं. दुआ चेंज नहीं होती है, इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि हम थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन को कि जिस दिन हमारे पास खुदा ताला की तरफ से एक पैगंबर, उसकी हिदायत, उसका कुरान, उसका नूर हमारी तरफ आया था, और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि ये दिन उसका है, और ये कहते हुए हम उसको ऑब्जर्व करते हैं फ्राइडे को कंपेयर टू नॉर्मल डेज. लेकिन उसी वक्त अगर चांद्रात आ जाए तो हम उस दिन फिर हम रोज़ा रखते हैं. तो उससे पहले कि हम उस बात करें कि ये 2 दिन साथ में होने से क्या होता है, इफ़ वी रीड द फॉलोइंग आयत आफ्टर व्हाट शी वाज रीडिंग, इट मे हैव आवर आंसर. ठीक है जी. तो सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 184. रमज़ान वो महीना है जिसमें नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं. लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए, हाँ इसको रिपीट करना, अब से जो शख्स रमज़ान को पाए, when you get to the month of रमज़ान जी, उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे. और जो शख्स मरीज हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे. अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता. इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको. और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो. So 184, a certain number of days, and him who is sick among you अच्छा ये पीछे बोला है. or on a journey, number on other days. And for those who can afford it, there is a ransom, the feeding of a man in need. But whose doeth good of his own accord, it is better for him. And that ye fast is better for you, if ye did but know. The month of Ramadan, in which was revealed the Quran, a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the criterion, and whosoever of you is present, let him fast the month. And whosoever of you is sick or on a journey, number on other days. Allah desireth for you ease. He desireth not hardship for you. And that ye should complete the period, and that ye should magnify Allah for having guided you, and that peradventure ye may be thankful. So I read chapter 2, Surah Baqarah, verse 185.
अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें we need to pay attention to it. If you have a Quran, I would encourage you to go home and read. One जो पहले हम लेंगे कि those who reaches the month of Ramzan, कि जो उर्दू के अंदर जो रमज़ान को पाल है, गुजराती में जी रमज़ान ने गोती ले, जिन्हें रमज़ान मली जाए, उसको रोज़ा रखना है. जिसको रमज़ान नहीं मिलता है, the one who does not reach to the month of Ramzan, you don't need to worry about it. Principle number one. Number two, if you are sick or if you are on the journey, then you don't need to worry about roza. Okay? Let's understand those two first. Okay. Because remember, this is the words of the Tanzil, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो हमको मिसालें दी गई थी, समझाया गया था, वो अल्फाजों में और मिसालों में. It was revealed to us in the words that we could understand. Example was given as we would understand through examples. और उसके पीछे जो तालीमात थी, the wisdom था, वो हमको सीखना था और हमको समझना था, ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सके, उसको सही मायनों में यूज कर सके और अप्लाई कर सके अपने ऊपर. यहाँ पर जो बात हो रही है और वो बात जो अभी हम बैतुल का के फरमान में देखेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर मिलता जुलता मिलेगा. इमाम का क्या फरमान है कि जब आपको whenever you have the happiness, if you see the nur, just keep it to yourself. अगर इमाम बोलते हैं कि जब आप नूर तक पहुंचा तो रोज़ा रखना, कोई फ़र्क था इन अल्फाजों में? कोई भी फ़र्क नहीं था, क्योंकि रोज़े का मतलब क्या होता है? Restrain yourself from doing something. और इमाम क्या बोलते हैं? Restrain yourself from telling others. Keep it to yourself. अल्फाज दूसरे हैं, लैंग्वेज दूसरी, इज नॉट अरबिक लैंग्वेज, ना इज इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन इंस्ट्रक्शन और माने सेम है कि व्हेन यू गेट टू इट, कीप रोजा, कीप क्वाइट, कीप इट टू योरसेल्फ, रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम टेलिंग अदर्स. बट अगर आप बीमार हैं, कौन सी चीज़ की बीमारी है? अगर आपकी रूहानियत की बीमारी है तो क्या करना होगा? यू कैन नॉट बी खामोश, यू हैव टू टॉक टू समबडी, यू हैव टू टेल समबडी. और अगर आप सफ़र में हैं, मीनिंग यू स्टिल ऑन द जर्नी ऑफ द रूहानियत, यू नीड टू आस्क फॉर डायरेक्शन, डोंट बी क्वाइट. आप समझ रहे हैं? ये दो बातें हो रही है यहाँ पर एक साथ. अगर आप पहुंच जाते हैं, इफ़ यू फाइंड इट, इफ़ यू रीच टू दैट लेवल, इमाम इज सेइंग कीप इट टू योरसेल्फ. यहाँ पर कहा, इफ यू गेट टू द रमजान, कीप रोजा. बट इफ यू आर ऑन द सफर, इफ यू आर ऑन द जर्नी, देन आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं है. बिकॉज ऑन द जर्नी आपको क्या करना होता है? यू नीड हेल्प, you need help, you need direction, you cannot be quiet. And if you are sick, you need to seek, इसका इलाज चाहिए ना. Again, you cannot be quiet because you are sick. अक्सर लोग हम ये समझते हैं कि we only get sick physically and then we go to doctor, we seek जो भी इलाज है, जो भी नॉलेज है, जो भी दवाइयाँ हैं, then we seek those help. भाई रूहानी तौर पर अगर बीमार है तो इमाम ने क्या फरमाया याद है ना? मैं आपका जिस्म का डॉक्टर नहीं, मैं आपकी रूह का डॉक्टर हूँ. तो यहाँ पर क्या फरमाया? अगर आपको रूहानी बीमारी है, आप मेरे पास आए. इफ यू आर ऑन द रूहानी जर्नी, कम टू मी. दैट्स व्हाट इमाम इज सेइंग, कि मैं आपका जिस्मानी डॉक्टर नहीं हूँ. इफ यू आर फिजिकली सिक, गो टू डॉक्टर, जो फिजिकल डॉक्टर है. अगर आपको स्पिरिचुअल बीमारी है,
then you come to me. If you want to walk on this path, you come to me. अब यहाँ से हमारा मतलब समझ में आने लगा कि यहाँ पर एक जर्नी की बात हो रही है, एक स्पिरिचुअल सिकनेस की बात हो रही है, एंड एक बात हो रही है कि जो उस मकाम को पहुंच जाता है, रमज़ान को पा लेता है, द वन हु फाइंड्स द रमज़ान. हिस्ट्री के अंदर हम देखें कि मौला अली का एक टाइटल जो था वो रमज़ान था. हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो मौला अली का एक टाइटल रमज़ान है. जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इनिशियली, अगर कुरान में ये लिखा हुआ था कि जब आप मौला अली को पा लें तो खामोश रहना. यहाँ पर मौला फरमा रहे हैं, when you have the nur, when you have the happiness, when you have understanding of this, when you see something, when you reach to that level, be quiet. और वहाँ पर कहा जाएगा when you find Ali, when you find the Ramzan, when you reach to the Ramzan, keep quiet, keep the roza. और इसके अंदर आपने देखा कि और दिनों के लिए भी फरमाया गया है, खाली एक दिन के लिए नहीं फरमाया गया कि if you find the other days, and what is our understanding or the tawilat of the days from the Quran, that a moment can not only reach Imam or the Prophet Muhammad, they may elevate themselves and may reach to the other days, meaning Isa, Musa, Ibrahim, Noah, what about Adam? Or someone can argue, okay, when we have a Muhammad or when we have an Imam, why do we even need all of them? Then I would not ask me that question, you need to ask Imam that question. Imam himself had given us Farman, okay, when you have a time, think where Adam came from. That's Imam's Farman. He wants us to think of those before Ali and before Muhammad as well. हमारी हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं, and even in Imam's Farman, he has given example of Musa, he has given example of Isa, of course Muhammad all the time, and Adam that we can refer back to. At least I remember those Faramin. If there are other Faramin about other prophets, I'm sure there are. तो क्यों भाई, अगर हमारे पास अली है, हमारे पास इमाम ज़मान है, what do we need to think about? No, we need to learn from their life. We need to learn their spiritual progress. How did they get to where they got to? किस तरह पहुंचे थे वो? And what was the key word behind the roza? So he may purify you. So they must be doing something to purify themselves to be able to reach to that level. So what we should be doing today? Following their footsteps. Now I think we have enough understanding of roza. Now we can come to the beach or Chandraat with Friday. बीच जो है या चांद्रात जो है, चांद्रात वो उस जमाने की तरफ इशारा करता है. चांद्रात इज फॉर द टाइम ऑफ द डे 7th. चांद्रात इज फॉर द टाइम day 7th. We talked about 6 days. We never talked about Saturday. We never talked about Saturday. And whose day is Saturday? If 6th day is Muhammad, whose day would be 7th? No, whose day is this Saturday? Does anybody know? Qiyamah. Qaim. क़यामत का दिन रिप्रेजेंट करता है सैटरडे को. सैटरडे को क़यामत का दिन रिप्रेजेंट करता है और कायम का दिन है वो. सैटरडे जो है वो कायम का दिन है. जिस तरह से फ्राइडे मोहम्मद का दिन था, थर्सडे ईसा का दिन था, और ऑन एंड ऑन. इसी तरह से
Saturday represent the Kayam. And the Chandraat represent Kayam. आप बोलेंगे नहीं, explain a little bit more. How do we understand that? In our तरीका again, जुम्मे से ज़्यादा हम चांद्रात को अहमियत देते हैं. जुम्मे से ज़्यादा चांद्रात को अहमियत देते हैं. We have already done the lecture on Chandraat. If we need to do it again, please let me know and we can revise that. But if you remember the फरमान कि ये दिन जो है, चांद्रात का दिन जो है, वो एक नए चांद का दिन है, and it will bring you रूहानी happiness. रूहानी happiness. क्यों? कि जो कायम का दिन है हमारे तरीके में, मेरे फ्रेंड हर तरीके, हर रिलीजन में कहते हैं कि एक दिन जब क़यामत आएंगी तो उनका जो भी है, जो भी नाम से वो याद करते हैं, मूसा है या ईसा है या मेहदी है या जो भी नाम से वो याद करते हैं, but they all believe on the day of Qiyamah somebody will come. And we also have the same belief in our tariqa. The day of Qiyamah, Qaim will come. खाली एक फ़र्क है हमारे तरीके और दूसरे तरीक़ों में और दूसरे रिलीजन्स के अंदर. They don't know how, when and where this personality will come. अगर आप किसी जूश को पूछेंगे, किसी क्रिश्चियन को पूछेंगे, किसी मुस्लिम को पूछेंगे, नॉन इस्माइली को, उन सब के पास ये कॉन्सेप्ट हो गए. वो बोलेंगे बस अचानक से एक दिन आ जाएगा. हाउ वुड यू नो? और वी विल नो. व्हाट इट वुड लुक लाइक, वी डोंट नो. लेकिन अगर इस्माइली तरीके के अंदर, इफ यू अंडरस्टैंड आवर तरीका, और हमको भी पूछे कि कायम कैसा आएगा, वी वुड हैव नो प्रॉब्लम आंसरिंग दैट. भाई वो इमाम ही होगा, आले नबी औलाद अली ही होगा. कहाँ से आएगा? इमाम की प्रोजनी से आएगा. What it would look like? Just like my imam. Simple. We would have no problem answering it. क्यों? कि हमारे यहाँ औकस बोकस नहीं है कि कहीं से वो टपकेंगे नहीं आसमान से. ऐसा नहीं कि कायम जब आएंगे तो आसमान से कैसे टपक पड़ेंगे. नो, हमारे यहाँ क्लियर है ये बात कि इमाम एक कायम, इमाम ही की प्रोजनी से, आले नबी औलाद अली ही हो गए, इमाम ही हो गए. और हमको कोई मसला नहीं होगा उसको पहचानने में और उसको देखने में, उसको समझने में. हाँ, जो बिलीवर नहीं है तो मौलाना हमको पहले से वो 100 साल पहले ये फरमान दे दिया है. वो फरमान क्या था कि जो यकीन वाले हो गए, ईमान वाले हो गए, वो भी माजिदात देखेंगे. जो बेईमान हो गए वो भी माजिदात देखेंगे. लेकिन जो बेईमान हो गए वो उस पर यकीन नहीं करेंगे. देखेंगे दोनों, लेकिन एक यकीन करेगा, एक यकीन नहीं करेगा. So that will be upon the people and the person, even within us. कि जब कायम आएंगे तो एक यकीन करेगा, एक यकीन नहीं करेगा. लेकिन इसका ये फरमान पहले से मौजूद है. आज अगर हम देखें, अगर इवन इन जनरल सेंस, forget about the concept of कायम, तो क्या देखेंगे आप कि बहुत सारे लोग इमाम पे यकीन करते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से यकीन करते हैं. कोई इसको आदमी बोलते हैं, कोई इसको जिस्म मानते हैं, कोई इसको नूर मानते हैं, कोई इसको सिर्फ एक हादी मानता है. हो सकता है कोई ज़्यादा स्मार्ट हो, बनेगा ही इज मोर स्मार्टर देन मी. दैट्स इट. हाउ मेनी पीपल डज बिलीव एंड रिकॉग्नाइज the imam or recognize the imam the way they should recognize the imam. यानी कि उसको इमाम बरहक के तौर पर, नूर अला नूर, खुदा के नूर के तौर पर कितने लोग देखते हैं, मानते हैं और समझते हैं. तो वी सी. ऑलराइट, कम बैक टू द चांद्रात. अब यहाँ पर हमको बीज का मतलब, सिर्फ रोजे का मतलब, कि जब आप यू रीच
at that fine line, जहाँ पर Friday, the knowledge and the personality of Prophet Muhammad, and the Saturday, the knowledge and the personality of Qaim comes together. And if you find it, not when you are on journey, not when you are sick, but if you find that, what are you supposed to do? Restrain yourself, keep roza. Keep roza, खामोश रहना, खामोश रहना, एक दिन के लिए मुंह बंद रखना. Do you see that? ना खाने के अंदर जो तावील थी वो मुंह बंद करने की थी कि बोलना नहीं है. अब आपको बेतुल का फरमान समझ में आने लगा कि when you get to the नूर अपना मुंह बंद रखना. यहाँ पर खाने पीने की फिजिकली वो बात थी, लेकिन स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली the understanding wise, it was never about food. It was always about keeping your mouth shut. Don't not disclose what you have found. और यहाँ पर बहुत बड़े एक माँ ने हमारे तरीके के अंदर कायम की तरफ इशारा करते हुए, मीनिंग सैटरडे की तरफ इशारा करते हुए, मीनिंग चांद्रात के उन्वान से और रोज़े के उन्वान से, विद इन द सब्जेक्ट ऑफ चांद्रात एंड रोज़ा, वहाँ पर छुपा के रखा गया कि व्हेन यू गेट टू द फाइन लाइन, व्हेन यू फाइंड दैट फाइन डे, कि जब आपको अली भी मिल जाए, लाइक इट सेज ओवर हियर, व्हेन यू गेट टू द मंथ ऑफ रमज़ान, व्हेन यू फाइंड द अली, कीप क्वाइट, रोज़ा रख लेना. अब यहाँ पर एक बात मैं ऐड करता हूँ, एंड देन वी विल एंड दिस सब्जेक्ट, एंड देन वी विल ओपन फॉर क्वेश्चनिंग इफ यू हैव एनी. कि क्या ये इवेंट, जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, आर वी टॉकिंग अबाउट जस्ट दैट वन डे ऑन द फ्राइडे एंड द चांद्रात कमिंग टुगेदर, और आर वी टॉकिंग अबाउट द डे when you will reach the Ramzan, when you will have the Noor, when you will find the happiness, when you will find the Saturday. हमारे लिए बीच का दिन कौन सा होगा? The day we reach to that level, and when we find ourselves at the junction of the Friday and the Saturday. अगर मैं कहूँ ये कि when you find yourself at the junction of the knowledge and the hikmat of the Muhammad, knowledge and hikmat of the Imam, when you find yourself at that junction, keep roza. Keep roza. क्या मतलब है? While you are at the junction, meaning while you are learning, you cannot be talking, meaning you cannot be giving this out to others. Keep quiet. Learn first. Take all this in. जब आपने पूरा अंदर ले लिया, एक दिन गुजर गया, आपको समझ में आ गया, then जब सूरज डूब जाए, यानी कि सनसेट आ जाए, वक्त आ जाए, then you can open your mouth and you can eat food. Meaning, now you can open your mouth and you may talk about it. लेकिन यहाँ पर जो एक बात हमने शुरू में कवर की थी कि अगर आप सारी रात खाना खाते रहते हैं तो क्या फ़ायदा? It defeats the purpose. So when you do open your mouth, watch it. You need to be sure, you need to make sure that what you are saying, you are not disclosing the secret of the Imam or the secret of the Qaim or secret of the Noor. You have to be careful what you're eating. Don't overeat. Don't oversay it. You have to limit yourself. और क्या? कि जो हलाल नहीं है उसको नहीं खाना है. Don't talk about things
to the people who does not deserve that knowledge. पहले शर्त क्या थी? You have to know how and what you're going to disclose. दूसरी शर्त क्या थी? कि even that don't disclose to people who does not deserve it. यानी कि वो खाना नहीं खाना है जो हमारे हक में अच्छा नहीं है. Those were the example. The food and the roza and the Ramzan was the example. उसका जो wisdom था, जो essence था, जो मतलब था, जो समझाना था और जो हमको लेना था, वो दीदार के सेंस में था, वो नूर के सेंस में था, वो इल्म के सेंस में था. तो यहाँ पर I will stop. जी. And you know, you're asking a question? Yeah. To understand more about the Roza and the Ramzan, if you guys have access to book E10, and I believe it's a discourse 33, which talks about Roza and Ramzan. And everything we talked about, you will find it there, including the ayats that we discussed from Surah Baqarah, you will find it there. And just summary of that small is in this book. You know, if you don't want to E10, which is about this big, but you can go to directly to that number 33 chapter in the book and you will find it. On this book, I think it's chapter 4 and page number 32, and you will find it in this one within 2, 3, 4 page, the summary of that. Of course, Pir Sahib words are much, much more stronger, better words, better knowledge. So if you have a chance, read his words, because those are the first-hand words that he has written in E10. Jamatana to do physical dua, but we do, right? Because physical is the door to batin. Same thing, Quran ki jo tanzeel hai, why do we go for tanzeel? Because tanzeel, without the tanzeel we cannot have a ta'wil. So without the physical, we cannot have a spiritual side of it. Same thing, Imam ka zahiri didar compared to Imam ka batini didar. Zahiri didar is the door to the batini didar. फिर इमाम का ज़ाहिरी इसमें आज़म जो हमको देते हैं वो एक अल्फाज, एक वर्ड, वो उसके बातिन की तरफ यानी इसके नूर की तरफ हमको ले जाता है. तो we see the physical plays a huge role in our tariqa and every tariqa actually, because you have to do few things physically so we may understand the batin of it. If you are only doing the physical thing without understanding the batin of it, तो फिर मसला क्या हो जाएगा? इमाम ने खुद अपने फरमाया है कि अगर आप सिर्फ ज़ाहिरी मज़हब को पालोगे तो आप ज़ाहिरी हो जाओगे, जबकि हमारा मज़हब बातिन का है. तो ज़ाहिर और फिजिकल practices supposed to bring us to the spiritual side of it, to the batin of it. So every time we do something physically, every time हमको उसके बातिन के बारे में सोचने का एक मौका मिलता है. So you know, in Kalam Maula says that jism is for kasr, jism is for sacrifice, for riyazat, for practice. And if you don't do things physically, there is no way that you can go to the next level. So things have to be done at physical level in order to get to the second level of spirituality. That is why when children are young, you teach everything to them physically. They do it just copying us. They don't know the meaning of it. But when they are at the right age, they need to grow to learn the spiritual part of it, the essence of it. If they don't do physical, they will never do spiritual too, because they never did the first step. So in every aspect, the Shariat or the physical aspect of it is always important, because physical is the door to the next room or next level. So you got to be crossing this to get to the next level. That is why every practice, it's important. Now why physical is so important? Because in every, if you, he's actually talking about one of the pillars of Islam. If we talk about all the 7 pillars, there is a physical part of it and there is a spiritual part of it. So in this class, we are not talking physical, we are trying to focus on spiritual part, because we all are adults here and we've gone through the physical part of it. But
now we are learning the essence of it, why we have been doing it, what it really meant. So he started with saying that all these physical practices are done for one reason only, to purify ourselves, to purify, to be able to go to the next stage. So Kalam-e-Maula says it beautifully. He says, Khuda ka dar jis dil vase, ve dil nit hove ujas. Meaning that whoever fears Maula, fears Allah, his heart will be brightened with the light. Why fear? Fear meaning that, that whoever follows the Shariat or the practices, he will eventually have the light in his heart. Meaning, he will get to the essence, the secret, the light, right? And then you fast. जिन्हें दिल अपना उजासिया दीदार की तो उसे पूगी आस. Whoever has enlightened his heart, it's not physical light, it's inside light. Who has enlightened his heart will have the good tidings of the didar. जिन्हें उजासिया तन के पूरे भाग, रब के डर से दिल आरिसा दीदार का, जिन्हें उजासिया तन के पूरे भाग. Your heart will become your mirror to see the image of the beloved, that you will have the didar. How? Jine ujasya tan ke pure bha, who has physically purified, enlightened the whole body. Right? So dua is a physical practice. Right? Fasting is a practice of your physical, purifying tummy. There's a scientific reasons of fasting too, right? So in every practice, there's a physical aspect, but the spiritual aspect is that you are enlightening, you're receiving that noor. Remember we talked about dua and noor? You're opening yourself to receive that light within you so you can get to the didar of beloved. Rab ke dar se dil ujaso, sota kyun hai gafil jaag. He says that have fear of your Allah. So fear not in the worldly sense of fear that we have to be scared of Him. He is merciful, but having the knowledge, the true knowledge that ultimately the goal is to be one with Him. Do not be stuck in these worldly things. Remember that we think of being in social life, being obliged to each other, but this is going to end. The real obligation, the true obligation is to Him. So we have to be fearful of that obligation the most. So we remember Him, and He says, Sota kyun hai gafil jaan. Normally we would think of, this is about 4 o'clock, we need to wake up and do bandagi. No, but it's actually being conscious every moment of your life, in every practice. Do not do anything just physically. If you don't understand the meaning, you better not do it. Right? Maula says, if you don't understand the meaning of dua, there's no benefit in it. You can say it as a parrot, but what does it truly mean? So if we do not know, if we are sleeping and doing just things unconsciously, it does not give us the fruit which we really seeking. ताजगी तो होवे मोमिन मुंह ऊपर, जो डर खुदा का होवे उस दिल. Taazgi, meaning freshness. A spiritual freshness, a spiritual bliss, a beauty will be on the face of a moment who has this realization or remembrance of obligations to Allah. कि खुदा के डर थी बदी ना करे और आछे काम करे तिल तिल. Due to his fear, due to remembrance of his love, his obligations, he will never do bad deed, and he will be conscious that he will do every second a good deed. घट मोमिन का मिंदर है, डर खुदा का है देवा भीतर. My heart, a momin's heart, is like a temple where there is a fear of Allah. Remember the fear of Allah meaning remembrance of Him, obligations to Him. कि जिस मंदिर में दीवा जले, the light is burning, the candle is burning in the heart of a moment, a temple, तो बाहर थी रोशन वैसे वे मंदिर. Whoever that moment is whose heart is having that light being lit, meaning that you are conscious. When you're doing things with understanding, you will be seen by others with that you have some light in you. You'll be seen. It will be witnessed. It will be evidently being recognized by your fellow Jamaati members. It will be evident. What he says,
तो बाहर थी रोशन दिसे हुए मंदिर. We are all individual human beings, but we are very different. So whoever is conscious, whoever is awake, that light will be seen by others.